Hello, everyone. Today we'll discuss some important question answers of data analytics using Python. And these questions will be important for your coming exam as well as they will clear many doubts regarding different topics of our data analytics. I will say that if you have any doubt, then directly just ask me. And we'll also see some programs. Okay, so let's start the class without any delay. Just a minute, I'm sharing the screen. So first we'll go through, some of MCQs. Remember, whenever this type of MCQs will come, you just need to answer, you need to choose the correct options as well as you have to give the correct explanations behind that answer. Means suppose you have chosen option A, then why you are using choosing A, means what is the reason that A is the correct option for these questions. So first question is, which Python library is primarily used for handling tabular data, rows and column? I told you, whenever this is tabular data, this means what? They are structured data, and whenever structured data is there, then we use pandas. So while NumPy is here, the technical explanation will be like this. Because if the question is for 2 marks, you need to choose the correct option as well as justify the answer. So here, correct explanation will be, while NumPy is highly efficient for raw multidimensional arrays, okay, but pandas introduce the data frame and series structures specifically designed for manipulating heterogeneous tabular data, right? And just a minute. It includes built-in arguments handling for missing data. That is also important. Relational operations, right? And Flux is a web micro framework and Keras is a high-level deep learning API. Here you will see there are other options. In the other options, we have the different libraries. So Flux we use for web micro framework, or you can say web development purpose, and Keras for high-level deep learning API. So correct option will be Pandas. Second question is like, which command we use to display last 5 rows of a data frame? You know that command is tail. So tail method in pandas. So remember, tail method of pandas returns the last n rows of a data frame object, and we have head for returning the initial rows info, that is for structural metadata outputs, and so is not a native pandas method. So question was asking about the panda means related data frame, so answer will be tail. Which library we use for scientific computing and array-based numerical option? Obviously, the correct answer will be NumPy, right? Or NumPy. So NumPy, that is numerical Python, is the foundational ecosystem framework, right? That that we use for scientific computing, and it provides the ND array, n-dimensional array objects that stores data in a contiguous memory blocks and leverages vectorized operations written in compiled C. So that's why NumPy is used for scientific computing, and I will say that this is the array because of which we use that. Then next, which function we use to determine the exact median value of a data set in pandas, and that is median. Okay, so median calculates the middle value of a sorted distribution, right? First of all, the condition is that the distribution should be sorted, then only you can find out the middle one. And other functions like mean for arithmetic average, mode for most frequent values. Then which graph is best suited for comparing discrete categories against a numerical matrix? So we need to compare different discrete categories against a numeric matrix. So if you can see the correct option here,
Then base one will be bar chart. Okay, bar charts we use primarily for comparison. Then scatter plot we use for showing the relationship between two continuous variables, histogram for frequency distribution, heat map for color coded matrix representation. And which method is used to identify missing or null values in a pandas data frame? That is none other than is null. Okay, we use is null for this purpose, that is finding or identifying missing or null values in pandas data frame. Is null scan a data frame and returns a Boolean value. Okay, true means missing value exists and false means value doesn't exist, right? So remember, is null returns a Boolean value. Fill NA for filling missing values. I hope you can remember, I talked many times about fill NA. Similarly, drop NA is for what? Removing missing values. So remember, these two also important. Fill NA for filling missing values, drop NA for removing the missing rows. Okay, then whose visualization library is built on top of the Matplotlib and designed specifically for high-level statistical graphics. That is not other than Seaborn. I repeated many times. That is about colorful output means charts, then we use Seaborn. That is above Matplotlib. So Seaborn is a high-level statistical visualization library built on Matplotlib. It integrates naturally with pandas data frames and provides aesthetically enhanced statistical plots. Which statistical technique is used to compare the means of more than two independent groups? So we need to compare more than two independent groups. Then it will be ANOVA. Okay, so ANOVA we use for comparing means of more than two independent groups. Tell me, if it is two, then what we use, right? Remember, I have repeated it in your class, right? So ANOVA, that is analysis of variance. This states whether three or more population means are significantly different or not. When there is two groups, the answer will be t-test. Remember, if there are only two groups, then we use what? We use t-test. If more than two groups, तब हम use करेंगे ANOVA. Correlation measures relationship. Okay, दो के बीच कितना correlated है, तो that is correlation, and regression for predictive modeling. Then which pandas function is used to combine distinct data frames based on matching keys? That is MARS, right? MARS performs relational database style joins. Like, if you could remember from your database management class, join is there, right? Inner join, left join, right join, outer join, and full join. So अगर आप लोगों को याद भी नहीं है तो टेंशन मत लो, ठीक है? कभी आप मैं भी अगर खाली रहूंगा और आप लोग भी फ्री हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? डीबीएमएस का वही कॉन्सेप्ट, जॉइनिंग, राइट? यहाँ इसको हम बोल देंगे मार्स. ओके, concat simply stacks data structures vertically or horizontally. Then which visualization technique is optimized to expose mathematical outliers for a 5 number summary? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम यूज करते हैं, that is box plot. तो box plot में 5 number summary देते हैं. क्या क्या देते हैं आपका याद रख लेना सब लोग. मिनिमम first quartile, that is Q1, median third quartile, that is Q3, and ultimately maximum, right? Minimum first quartile, Q1, median, and Q3, that is third, and maximum. So outliers that will be lying beyond 1.5 into IQR, and IQR क्या है? Q3 minus Q1 is equal to IQR. So IQR is equal to Q3 minus Q1. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को. एंड जो आउटलायर होगा वो 1.5 into IQR, मतलब ये वैल्यू से अगर बाहर है तो वो हो जाएगा आपका आउटलायर्स. मैं आपको जल्दी से एक प्रोग्राम दिखा देता हूं, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जितना भी मैं दिखाऊंगा अभी. जस्ट अ मिनट. फॉर बॉक्स प्लॉट,
सो ये है आपका बॉक्स प्लॉट का प्रोग्राम। आपको पता ही है हम यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब, राइट, pyplot एस plt। एक सैंपल डेटा सेट ले लिया, मार्क्स ये लिस्ट है, ऑल ऑफ यू नो। देन प्लॉट डॉट फिगर, ठीक है, फिक्स साइज 6x4, 6,4, ठीक है। देन ये कुछ नहीं, हम लेंथ एंड ब्रेथ डिफाइन किया। देन टाइटल दे दिया ब्लॉक्स प्लॉट ऑफ स्टूडेंट मार्क्स, वाई लेवल मार्क्स दे दिया, मतलब वाई साइड में मार्क्स हो गया और एक्स में तो है ही आपका वैल्यूज। देन शो कर दिया, इसको रन किया हमने। यू कैन सी दिस इज द बॉक्स प्लॉट, ये दिखाई दे रहा है ना, ये बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये आउटलायर है। यहाँ पे एक पॉइंट जरूर होगा, जैसे 150 है, वो आउटलायर है, क्योंकि ये बॉक्स से बहुत वन, इसका क्वार्टाइल कितना था आपका वैल्यू याद रखना, 1.5 इंटू IQR से दूर में है, ये बहुत दूर में है। तो इसमें आपका मिनिमम है, मैक्सिमम है, देन आपका मीन जो मीडियन है वो है, ठीक है। इसको हम मीडियन बोल रहे हैं, 20 वाला बोल रहा है। और ये पहुंचने से पहले फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल है। तो ये होता है बॉक्स प्लॉट, रिमेंबर, ये बॉक्स प्लॉट है, ये आपको कर लेना है। प्लीज डू दिस प्रैक्टिकल, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड ये भी याद रख लेना, ठीक है। देन हम देखते हैं आप कुछ कंपैरिजन, लाइक कोड डाटा स्ट्रक्चर में हमारा बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर है, एरे, लिस्ट। सो numpy arrays वर्सेस पाइथन लिस्ट, क्या डिफरेंस है? ये पाइथन लिस्ट स्टोर्स रेफरेंसेस टू objects across fragmented memory location, like NumPy and the array enforces homogeneous data size और डाटा टाइप्स, ठीक है। तो एनडी एरे में आपका होमोजेनियस डाटा टाइप्स है, मतलब एक ही जैसा आइटम होना चाहिए। स्टोर्ड डाटा continuously in memory, enables vectorized computation, ओके। इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ता है, दिस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव स्पीड, मेमोरी एफिशिएंसी एंड मैथमेटिकल प्रोसेसिंग। आपको एक यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल भी किया है। इंपोर्ट नाम एस एनपी, इंपोर्ट पंडस एसपीडी। तो एनपी डॉट एरे 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है, ये इंटीजर है, सो एक ही टाइप का हमने लिया है। देन वेक्टराइज रिजल्ट एनपी एरे डॉट मैंने क्रॉस 2, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। सो यू कैन सी हियर, ठीक है, यही है, ये मैं पहले किया था। एनपी डॉट एरे 1 2 3 4 5, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 6 8 10, ठीक है। देन सीरीज वर्सेस डाटा फ्रेम्स। सीरीज क्या है, वन डायमेंशनल लेवल डाटा स्ट्रक्चर एंड डाटा फ्रेम इज ए 2 dimensional tabular structure containing rows and columns. So in pandas we have indexing method like LOC, that is level based indexing, ILOC, that is integer position indexing, right? So say डाटा मैट्रिक्स हमने ले लिया, सब्जेक्ट ए 88, आप लोगों को पता ही होगा ये हम क्या कर रहे हैं, की वैल्यूज, राइट। तो 88 92 79 सब्जेक्ट भी ले लिया, आप उसको, ये मतलब ये जो डाटा मैट्रिक्स है, ठीक है, ये तो पेयर्ड वैल्यू के हिसाब से है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं, जब पेयर्ड वैल्यूज आर देयर देन दैट इज कॉल्ड नोन एज व्हाट, I hope you know this theory, right? TF PD dot data frame, data index, and index student 1, student 2, student 3. We have printed the location and the scores. What we are doing, we are filtering the values. Mane DF subject B is greater than equal to 85. Then that is showing the what? High score. So we are printing that. Just a minute. I'm showing you here there. So this is the problem. Here we have student 1 and student 2. Okay. And subject are subject A, that is integer 64. Right. And filtered output for high score, student 2, student 3, because the filtering is greater than equal to 85. So क्या होगा ये, right? क्या होगा या नहीं? Then 92, right?
सो आपको क्या करना है, यू आर फिल्टरिंग फॉर सब्जेक्ट बी। सो सब्जेक्ट बी में आपका इसमें 85 या तो 85 से ज्यादा है, राइट। एंड देन फॉर दैट वैल्यू we are printing this student 2 and student 3, right? Student 2 and student 3, these are the values 92 and then 79, and other is obviously 85 and 90। ठीक है, समझ में आ गया ना स्टूडेंट? ये आपका स्टूडेंट 1 हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम स्टूडेंट 2, थर्ड कॉलम स्टूडेंट 3। सो दैट्स व्हाई this it is, and then we are having subject A and subject B. For subject B greater than equal to 85, we have this 2 because we are selecting this 2 only, student 1 to student 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट का फिल्टर्ड आउटपुट। देन एंड टू एंड प्री प्रोसेसिंग, लाइक प्री प्रोसेसिंग में हम करते हैं मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यू। आप मत बता देना कि मिसिंग वैल्यूज किया नहीं है, हमने मिसिंग वैल्यूज बार बार बहुत बार किया है, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट एंट्रीज, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, डिफरेंट न्यूमेरिकल स्केल्स। तो इसमें हम फाइल ऑपरेशंस के लिए जो यूज करते हैं, देयर आर सो मेनी pandas functions like read CSV for reading the that CSV values files, right? And here you need to put the locations or path where the file exists, including the file name. Then for Excel, that is very simple, read Excel. And suppose we want to convert two CSVs, then two CSV functions, again when CSV to say Excel, then to Excel. तो ये these functions please याद रख लेना, बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिकल करके भी देखना। सो मिसिंग वैल्यूज, तो डाटा क्लीनिंग टेक्निक्स में आपका पहले है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। फॉर दैट वी यूज इजनल, ड्रॉप एन एंड फिल एन ए। ठीक है, रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज वी यूज df dot drop duplicates। drop duplicate is the function, df is for the data frame, right? And for string operation, say we want to upper and strip, then we have upper and strip functions। then जितना भी हम दिखा रहे हैं ना, so you please do it for practical, okay? It's very easy if you practice, then याद भी रहेगा आपको। then for feature scaling, when variables have different ranges, we can scale it like age 0 to 100, income 0 to 50,000। so we can 5 lakhs, then we can convert into the range like 0 to 1। for that we will use normalization technique like min max normalization। min max normalization का formula है आपका x minus x minimum divided by x max minus x minimum, and the scales will be giving the value between 0 and 1। then standardization, that is z-score scaling, and the formula is x std x minus mu divided by this standard deviation, mu stands for mean, right? and this transform the data to mean 0 and standard deviation 1। then exploratory data analysis हमने पढ़ा था, that helps to find out or identify trends, patterns, relationship, and outliers, right? and for descriptive statistics, we have mean, median, variance। variance means average squared deviation from the mean, always remember that variance is calculated from the mean, okay? average squared deviation from the mean, and standard deviation is the square root of the variance, okay? and standard deviation is the square root of the variance। and for grouping and aggregation, we use group by function that follows split, apply, and combine, like this one is an example, okay? I'm showing you। so these are the data, sales data, you can see here, this is a dictionary, right? maximum times we use dictionary, and then we convert into data frame। so for that we use data frame function। ये data frame function में ये sales data हमने entry कर दी, right? we have passed the sales data, and it is being now converted into data frame sales underscore df। now summary matrix sales df group by region wise grouping करेंगे हम, revenue and aggregation of sum and mean।
So printing the summary matrix. So group by is used. That's why east, north, and west. East, north, and west. Sum and mean. Right. इसका कितना है? 2 है, ये है, and ये है. नॉर्थ का तो एक ही है, तो 75,000 will be coming, and then west this one. ठीक है. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ग्रुप बाय का मतलब होता है आपका ये जो आपका कॉलम या तो जो भी आप एट्रीब्यूट है उसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप बाय कर रहे हो, और समेशन हो जाएगा. जो अगर से इसका 2 है 3 है तो अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक. और जो नहीं है वो सिंपली ये आ जाएगा. मीन मतलब मीन ही है. एक वैल्यू है तो उसका मीन क्या होगा. राइट. Then inferential statistical modeling that draws conclusion about population using sample data. For that we have hypothesis testing framework. Hypothesis is the assumption based on some statistical evidences, right? And we have different type of hypothesis like null hypothesis that is represented using H0, right? This is the symbol, and null hypothesis means there is no significant effect exists, like mu1 is equal to mu2. Similarly, alternative hypothesis H1, right? And here a significant effect exists. If no significant effect, then that is null hypothesis. Alternative means significant effect exists, and p-value means p-value shows the significance, and if p-value is less than 0.05, remember, then we will reject A0. Okay, if p-value is लेस देन 0.05, ये आपको पूरा याद रख लेना पड़ेगा. हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना मतलब क्या होगा? वी आर एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. ठीक है. दोनों के बीच यही है कि नल हाइपोथेसिस हम मान के चल रहे हैं कोई भी इफेक्ट नहीं है. ऑल्टरनेटिव मतलब दोनों के बीच क्या है? सिग्निफिकेंट इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, और पी वैल्यू 0.05 से कम हुआ तो हम रिजेक्ट कर देंगे एस नॉट एंड एक्सेप्ट कर देंगे एस वन को. तो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टी टेस्ट व्हेन वी कंपेयर two means, comparing two teaching methods. ANOVA when more than two, that is 3 and more, comparing multiple means, that is comparing fertilizer. Then chi-square method is also there, or chi-square test, that is to use or compare categorical data, right? Categorical के लिए हम chi-square टेस्ट यूज करते हैं. तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना टी टेस्ट, एनोवा एंड chi-square टेस्ट. ओके. देन डाटा के बीच कितना रिलेशन है, कोरिलेशन है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स एंड स्पीयरमैन कोरिलेशन मैट्रिक्स. ओके. तो पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स दैट इज आर मेजर्स. मैट्रिक्स मतलब मैं ये मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, नॉट मैट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैट्रिक. ओके. सो पियर्सन कोरिलेशन दैट इज आर मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप. याद रखना, लीनियर रिलेशनशिप को दिखाता है. एंड स्पीयरमैन कोरिलेशन दैट मेजर्स द रैंक बेस्ड मोनोटोनिक रिलेशनशिप. ठीक है. Then we have some programs like academic performance tracking. तो ये सब थोड़ा सा प्रोग्राम मैंने रखा हूँ. इम्पोर्ट pandas spd, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot_splot. हमने फिर से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये करके आप लोगों को सो याद हो गया होगा. ये हम डिस्ने बनाया ग्रेड बुक. अब उस डिस्ने को हम कन्वर्ट कर देंगे डाटा फ्रेम में. ठीक है. स्टूडेंट आईडीज में स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, डी, ई. देन जब हम ग्रेड देखिए डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रेड बुक प्लस इंडेक्स क्या क्या लिया हमने, जो डिफाइन किया स्टूडेंट आईडीज लिस्ट में वो ले लिया. ठीक है. उसके बाद प्रिंट कर दिया ग्रेड्स. उसके बाद हम एवरेज ले रहे हैं थ्रू द मीन्स फंक्शन. ठीक है, सिंगल एक्सिस में. और उसके बाद ग्रेड्स को फिर से प्रिंट किया. बेंचमार्क स्कोर 75 रख के टॉप परफॉर्मर को कैलकुलेट किया. कैसे कैलकुलेट किया? DF ग्रेड्स इंडिविजुअल एवरेज इज ग्रेटर देन बेंचमार्क स्कोर, मतलब 75 से ज्यादा हो रहा है तो वो टॉप परफॉर्मर है, एंड वी आर प्रिंटिंग द टॉप परफॉर्मर्स एंड we have plotted it, right? Plotted it. This we refer to mathematics, physics, chemistry. Bars are fixed size 9 and 5.
देन कलर देखा ब्लैक, टाइटल रख दिया एकेडमिक स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, प्लॉट एक्स लेवल में स्टूडेंट आईडी, वाई लेवल में स्कोर एंड शोइंग इट। तो इसमें आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर, आई डोंट थिंक दैट यू हैव एनी डाउट ऑन दैट, राइट? यू कैन इजीली डू दैट, बट इसको छोड़ना नहीं है आपको, यू प्लीज डू इट। ठीक है, तो हमने बना लिया इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब pyplot प्लॉट, ये पूरा ये बना लिया डिक्शनरी, और ये हमने आईडी मतलब ये जो कॉलम है, कॉलम हमने खुद डिफाइन कर दिया, इंडेक्स, राइट? देन डाटा फ्रेम जो बनाया उसमें ग्रेड बुक इंडेक्स और हमने डिफाइन किया, इंडिविजुअल एवरेज निकाला मीन से, देन स्कोर डिफाइन करके रखा 75, इसको आप 80 भी कर सकते हो। तो उसके बाद फिल्टरिंग ऑपरेशन किया, टॉप परफॉर्मेंस डीएफ ग्रेड्स, राइट? डीएफ ग्रेड्स इज ग्रेटर देन बेंचमार्क, तो ये फिर से लिस्ट में कन्वर्ट हो गया टॉप परफॉर्मेंस। देन इसको हमने बार चार्ट में प्लॉट कर दिया, ये आ गया आपका वैल्यूज, you can see the initial average and this is the bar chart। तो कंपेयर कर रहा है स्टूडेंट ए का मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है? तो इससे पूरा प्रॉपरली बार चार्ट पूरा प्रॉपरली कंपैरिजन करके दे देते हैं आपका किस में ज्यादा है किस में कम है। सो दिस प्रैक्टिकल प्लीज डोंट लीव। देन आप हम और एक कर सकते हैं जैसे कि सेल्स ट्रेंड एनालिसिस, ये सब डाटा साइंस का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, तो प्लीज डू इट। तो इसमें भी हमने पांडास यूज किया, मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट ग्राफिकल के लिए हमने फिर से सेल्स रिकॉर्ड ये डिक्शनरी बनाया, ठीक है? और डिक्शनरी बनाने के बाद उसको फिर से डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, डीएफ सेल्स, उसको प्रिंट किया, रेवेन्यू को हमने साम निकाल लिया, मंथली रेवेन्यू देखो ये मंथली रेवेन्यू, उसके बाद मीन निकाला, मीन के लिए उसको टोटल रेवेन्यू और मीन रेवेन्यू प्रिंट किया, रेवेन्यू थ्रेशोल्ड रख दिया 50,000, ये भी तुम सेंस कर सकते हो। हाई ग्रोथ मंथ्स क्या होगा जब थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो रहा है, दैट इज डीएफ सेल्स मंथली रेवेन्यू इज ग्रेटर देन रेवेन्यू थ्रेशोल्ड। तो ये आपका हाई ग्रोथ मंथ्स में आ गया, किस मंथ में ज्यादा हो रहा है, और उसको हमने प्रिंट कर दिया और उसको फिगर में हमने साइज डिफाइन कर लिया 9 एंड 4.5, प्लॉट कर दिया सेल्स मंथ तो और सेल्स मंथली रेवेन्यू, मार्कर रखा 0, लाइन स्वीट 0 मतलब इस टाइप का मार्कर रहेगा, आप देखना फिगर में अभी। एक्सेस वाई एक्सेस डिफाइन कर लिया, राइट? ग्रिड ग्रिड स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब आपका ग्रिड टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? दिखाऊंगा अभी कैसे होता है, ठीक है? जस्ट सी, दिस इज द प्रोग्राम। सो ये हो गया आपका मंथली रेवेन्यू मंथ वाइज, किस किस में ज्यादा हुआ है वो आ गया है, 56, 62, 71 आना सही, राइट? ये आ गया, कैसे आ गया था? क्योंकि हमने थ्रीशोल्ड जो है, हमने थ्रीशोल्ड जो है 50,000 रखा था, राइट? थ्रीशोल्ड वैल्यू वी हैव केप्ट 50,000, ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? सो देन इट विल बी चेंज। सो दिस इज द chart you can see, and this chart we have used this, right? एंड ग्रिड में जो मैंने बोला था ना, ग्रिड इज इक्वल टू ट्रू, सो ग्रिड टू मतलब ये सो आपको ये स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज ग्रिड। इससे हमें समझ में आता है जल्दी से अच्छे से। तो आप देख सकते हो जून में सबसे ज्यादा हो रहा है, राइट? जून में सबसे ज्यादा हो रहा है। थ्रेशोल्ड को यू कैन सेंस सपोज थ्रेशोल्ड से let's see 60, so let's see what will be the values, then only two values are coming, right? Two values are coming. That way you can do the all practicals, and I have discussed almost important questions. If possible, I'll take one more class, but this one please revise and revise. Tomorrow, if you find any difficulty, then please ask me. Okay? आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होने से भी प्लीज आप लोग पूछ लेना मुझे, ठीक है? ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।